Guys, welcome back. We'll talk about India-Pakistan war. So here's the thing. Oh, this is not my account. The one that I really like. Okay. So here's the thing. Only people living near border know what war actually is. I watch this for a second. So here's the thing, bro. I don't understand one simple thing, that we have technically escalated into hot war. Okay, and hot war का मतलब है the nations are fighting, the military of the nations are fighting. Now इसका मतलब ये है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से अभी लड़ रही है. And this is, to be honest, I don't think this is the best strategic move on our side. I mean, okay, so because हमारा गोल ये था कि we wanted to take a revenge for 29 Hindus that were killed in Pahalgam. But here's the thing, आज पहुंच में कौन सी जगह है ये? पूंछ ना. पूंछ में और भी तो ज्यादा लोग मरे, और भी ज्यादा लोग मरे जो इंडियन है, एंड हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों पूंछ में मरे. आई नो 2 मुस्लिम बच्चे मरे और बहुत सारे हिंदूज मरे. सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ किलिंग इंडियन सिविलियंस एंड पाकिस्तान हैज किल्ड इंडियन सिविलियंस. सो मतलब अगर वॉर एस्केलेट होता है, एंड एस्केलेशन में दोनों साइड्स कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, जब दोनों साइड्स कंट्रीब्यूट करती है तभी वॉर एस्केलेट होता है. सो इफ एस्केलेशन होने वाला है, this means civilians are going to die on both sides. And when I say civilians, I mean you and me. Okay, like ये ना, वॉर कब तक सही लगता है? वॉर कब तक एक शो लगता है, वॉर एक मूवी तब तक लगती है जब तक हमारे साथ नहीं हो रहा होता है. नाउ दिस पीपल इन पूंछ हु आर डाइंग, दैट रियल पीपल. ओके, ये फैमिलीज है जो अफेक्टेड हुई है, ये बच्चे मरे, औरतें मरी, ये आदमी मरे. ये तो वॉर जब एस्केलेट होता है तो सिविलियंस मरते हैं. एंड हियर्स द थिंग, अगर हम चाणक्य नीति के हिसाब से या संजू आउट ऑफ वॉर के लाइन ऑफ थिंकिंग में थोड़ी भी बात करूं, तो आई थिंक कि वॉर में ना ब्रो, इट्स लाइक हॉट वॉर इज द लास्ट सोल्यूशन. ओके, हॉट वॉर इज द लास्ट स्ट्रैटेजी. यू शुड नेवर गो फॉर हॉट वॉर सो सून. ओके, आई मीन लुक एट अमेरिका. अमेरिका कभी हॉट वॉर नहीं करता. अमेरिका हमेशा प्रॉक्सी वॉर करता है. वो हमेशा रेजिम चेंज करता है. एंड व्हाई द फक आर वी नॉट फॉलोइंग यूएसएस प्लेबुक? बिकॉज ये बात तो सही है कि पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान आर्मी से टू बी ऑनेस्ट वो लाइक परेशान हो चुके हैं. पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हो चुके हैं. वी नो दिस फॉर अ फैक्ट. ओके, एंड एज इंडिया, as Indian government, rather than going into a hot war, we could have done something to raise the opposition in Pakistan, कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप है हम उसको खत्म कर सकते थे. ओके, जस्ट थिंक ऑफ दिस. ना हमने कोई रेजिम चेंज की, ना हमने कोई प्रॉक्सी वॉर किया है. हम एक शो ऑफ स्ट्रेंथ में चल रहे हैं कि ना तुम हमारे इतने लोगों को मार सकते हो, हम तुम्हारे इतने लोगों को मार सकते हो. ब्रो, इट इज नॉट अ क्रिकेट मैच वेयर ज्यादा रन स्कोर कौन कर रहा है ये मैटर करता है. ओके, यहाँ पे किल्स है, लोग मरेंगे, सिविलियंस मरेंगे. सो दिस मीन्स दैट, आई मीन, तुम किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हो? किल टू डेथ रेशियो. आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट इफ किल टू डेथ रेशियो ऑफ इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान? बिकॉज अगर पाकिस्तान के 1000 लोग मरते और इंडिया के 2000 लोग मरते, सिविलियंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इंडिया का टेक्निकली kill to death ratio is 2-1. Okay, so are you going to celebrate that shit? I hope not, because ये kill to death ratio celebrate करने वाली चीज नहीं. I hope you are not those PUBG tarts. और क्या कहूंगा मैं उनको, PUBG tarts. Okay, people who are going to celebrate civilian death technically and treat is as if ये कोई क्रिकेट के रन्स है या PUBG के kill to death ratio. No, these are real people. They are real life. They are children, women and men. And we know for a fact ये पूंछ का जो अटैक है, इसका मतलब पाकिस्तान is capable of killing our civilians.
ओके पहले तुम ये बात छोड़ो कि वी आर एक्सट्रीमली केपेबल एज अ आर्मी एंड वी विल नॉट मेक मिस्टेक्स. नो, वी विल मेक मिस्टेक्स. इट्स इम्पॉसिबल कि कोई आर्मी मिस्टेक्स नहीं करेगी. इनफैक्ट द पहलगाम security breach was a fact that we are not that prepared actually. Okay, we are not that prepared. Let's accept the fact. And if now abhi to agar full scale war ho raha hai to people are going to fucking die in huge numbers, bro. Now I mean you have no idea what it is like to be in Gaza जहाँ पे actual लोग मर रहे हैं हजारों की तादाद में. ओके इंडिया में वो नहीं हो रहा है. लोगों को लग रहा है अरे 29 लोग मरे. बहन जब हजारों लोग मर गए तब तुमको समझ में आएगा. सो आई हैव अनदर स्टोरी जो मैंने ये करी है. दिस इज अ मीम दैट आई शेयर्ड. क्या है? कटवा होगा तू रंडी बच्चे, ये हमारा मुल्ला है जैसा भी है. हाँ चलो, एटलीस्ट इंडिया में यूनिटी है. क्या हमारे अटैक. ओके सो यस आई थिंक हम सबको किरण क्या केशव बेदी का ये वीडियो देखना चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, हॉट वॉर इज अ स्टूपिड आइडिया. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, सिंदूर वॉज अ लो IQ शिट. ओके जस्ट लाइक इट्स नेम. ओके उसका नाम भी लेम था. एंड द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यू हैव एस्केलेटेड. तुमने कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं किया. यू जस्ट लाइक अभी क्या होने वाला है कि हम अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे. पहले वो हमारे 10 मारेंगे, फिर हम उनके 20 मारेंगे, फिर वो हमारे 30 मारेंगे, फिर हम उनके 40 मारेंगे, फिर वो हमारे 50 मारेंगे, फिर हम उनके 60 मारेंगे, फिर वो हमारे 100 मारेंगे, हम उनके 200 मारेंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज वॉर. दिस इज नॉट अ क्रिकेट गेम जहां पे रन ज्यादा करने हैं हमको. ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ, बस इनिंग्स चेंज होती रहेगी. नो. हमने पाकिस्तान में करे, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हैव दे डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान कैपेबिलिटी टू अटैक इंडिया इन द फ्यूचर? पहले तो मेरे को ये बताओ. अगर नहीं तो अटैक का पर्पस तो ये है ही नहीं कि आपको कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय करनी है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, जैसे उन्होंने करा एलिजिडली, जो कि मैं मानता हूं करा, उन्होंने करा, आप भी तो कर सकते थे. पर आपने वो नहीं चूज करा एक्शन. क्यों? क्योंकि आपको इंडियन पब्लिक को दिखाना है. अल्टीमेटली घूम फिर के बात यही आती है, इंडियन पब्लिक को दिखाना है कि भाई हमने कुछ करा है, हमने कुछ करा है. देखो हमने घर में घुस के मारा दुश्मन को. दिस इज द सोल ऑब्जेक्टिव या सोल पर्पस ऑफ दिस कैंपेन जो हमने पाकिस्तान में करा है. एग्जैक्टली. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये था इंडिया का यहां पर कि हमें इंडियन पब्लिक को दिखाना है कि पहलगाम में जो हुआ हम उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे, हम हमला करेंगे. नेवर माइंड कि क्या इससे आप ये इंश्योर कर रहे हो कि दोबारा अटैक नहीं होंगे. क्या आप इनसे इंश्योर कर रहे हो कि कैजुअलिटी का काउंट इंडिया में इंक्रीज नहीं होगा जिससे आप इतने ज्यादा खफा हो? वो तो फैक्टर है ही नहीं, उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी. अल्टीमेटली यू हैव टू सेटिस्फाई इंडियन मासेस जो मोस्टली इग्नोरेंट है और जिनको चाहिए कि भाई हमने बदला ले लिया. ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्टिव है, मान लो प्लॉजिबल. कितना लंबा ऑब्जेक्टिव है, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, आपने क्या अचीव करा, एंड एट व्हाट कॉस्ट, ये आपको बताना पड़ेगा. Exactly. Okay. I agree with Keshav Bedi what he is saying. Okay, and he is काफी अच्छा strategist और economist, I would say. Even though we disagree on few things, I disagree with him on few things. But here's the thing, he is right कि हमने पाकिस्तान को परमानेंटली डिस्टेबलाइज या न्यूट्रलाइज नहीं किया है. ओके, आई मीन दैट शुड हैव बीन द गोल कि पाकिस्तान इसके बाद से एक भी इंडियन सिविलियन को मार ना पाए. पाकिस्तान या पाकिस्तान के टेररिस्ट, आई मीन अगर वो हमारे आके मार पा रहे, अगर पूंछ में इतने सारे इंडियन सिविलियंस मरे हैं, इसका मतलब व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड यू अचीव? तुम सिर्फ वन अप कर रहे हो क्या एक दूसरे को? अबे ब्रो, दिस इज वॉर, दिस इज नॉट अ क्रिकेट गेम जहां पे तुम एक दूसरे को वन अप कर रहे हो. ठीक है, तो आपने पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक करा. लोग चीज कर रहे जैसे क्रिकेट का गेम है. अबे वॉर है ये. ओके, द बेस्ट केस सिनेरियो इज ऑलवेज टू अवॉइड वॉर. एंड वॉर कर भी कौन रहा है बे? पाकिस्तान के बुढ़े और इंडिया के बुढ़े. आई मीन लिटरली दैट इज द केस. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. और अगर इंडिया की यंग जनरेशन मरती है, जेनजी मरती है, या पाकिस्तान की जेनजी मरती है जिनका एक्चुअली वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे जेनजी है नहीं जो वॉर चाहती है, बट आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर मेनी पीपल, द मेनी किड्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान
who would, to be honestly, be friends with each other? I mean, seriously, I mean, and I'm saying this from a personal point of view, bro. I mean, their Pakistani girls are fucking beautiful. Okay, and I don't want them to die. I don't want them to fucking die. I want them to come to fucking India on a tour so that I can कि पटा लूं भाई किसी को. Okay, and I'm not even fucking joking. That is a good scenario. That is the ideal scenario. You know, meme war is better than actual war. Hot war is never good. और अगर करना है तो कोल्ड वॉर करो बहनचोद. कोल्ड वॉर करो, प्रॉक्सी वॉर करो, रेजिम चेंज करो. I mean, USA और Israel are known for regime change. Okay, वो regime change करने में माहिर है. Why the fuck are we not playing by that book? हम regime change क्यों नहीं कर रहे? हम पाकिस्तान में military dictatorship है, उसका regime change कर दो यार. Okay, support इमरान खान. I am pretty sure कि पाकिस्तान का जो इमरान खान है, जो ex prime minister है, वो he is against military dictatorship. And so many people in Pakistan are against military dictatorship. पाकिस्तान के लोग भी बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी टेररिज्म से थक चुके हैं. Imagine how happy Gen Z of Pakistan would be if India literally did a regime change in Pakistan and ended terrorism for once and for all. But no, हम hot war कर रहे हैं. You need to understand ये strategically उतनी भी अच्छी move नहीं है. I mean, just think about this. Would Chanakya be happy with this shit? I mean, अगर मैं चाणक्य नीति के दिमाग लगाऊं तो I would say always avoid casualties. पढ़ लेते हैं कि क्या करा और उसके बाद देखते हैं उसके नतीजे क्या हुए. 26 लोग मर गए हॉरिफिक इंसिडेंट में, हॉरिफिक टेरर इंसिडेंट में. अब क्या हो गया? कैजुअलिटी काउंट क्या हमारा इंक्रीज हुआ नहीं हुआ है इंडिया में? आप देखो पूंछ से क्या रिपोर्ट आ रही है. ये देखो, 12 किल्ड आफ्टर स्कूल्स, गुरुद्वारा एंड हाउसेस टारगेटेड बाय पाकिस्तानी आर्मी. आपने कहा कि 26 लोग मर गए, उसका सबक सिखाने के लिए हमने पाकिस्तान पे हमला करा है. ये सबक सीख लिया? उन्होंने 12 बंदे आपके मार दिए शेलिंग करके. तो सबक सिखाना क्या होता है? ये आप इंडियन पब्लिक को बस ये कन्विंस कर रहे हो कि हमने कुछ कर दिया. ये ही है बस ऑब्जेक्टिव इस ऑपरेशन का, और कुछ भी नहीं है. आई एम टेलिंग यू ब्रो दिस. इंडिया एज अ कल्चर, एज अ सिविलाइजेशन इज नॉट गुड एट वॉर स्ट्रेटेजी. ओके, ये हमारा 1000 साल का इतिहास हमें बताता है कि हम वॉर स्ट्रेटेजी में उतने अच्छे नहीं है. Okay, now we might have nukes, we might have a good functioning economy, but now India इसमें. और here's the thing, what if Indians and Pakistanis are pawns in this? Because wars are initiated by military industrial complex. हम military industrial complex के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? I mean, there's a good chance कि military industrial complex of USA and Israel, who is a master of instigating wars, ठीक है? Israel and America are known for instigating wars. They are masters at it. Okay, I mean, they know how to get wars, but how difficult it is. And this is my personal assertion that I have this feeling that Israel probably did it. And I'll explain you why later. रियलिस्टिकली स्पीकिंग, सोचो जरा दिमाग लगा के. वीडियो खत्म हो जाएगा. और आप उसको अचीव कर रहे हैं व्हाट कॉस्ट? ये आप अपनी खुद की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, इंडियन पब्लिक की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमने कुछ कर दिया. आपने सारा ना आप कभी इंश्योर करा सकते फ्यूचर में अटैक नहीं होंगे? करा सकते? नहीं करा सकते? नहीं करा सकते. कौन ऐसा माइकल लाला जो यूट्यूब में कॉपी लिख कर देते कि इसके बाद नहीं होने क्या अटैक? आपने करा, कर रहे हो, उसके बाद ही पलट के आपके ऊपर अटैक हो गया. इन कैजुअलिटी का क्या? अब इनका भी बदला लोगे? हाँ बहनचोद, अभी तो 12 लोग और मर गए ना, तो 29 + 12 हो गया. 29 + 12 कितना हो गया? I mean, कितना 31 हो गया. Now 31 casualties. We increase the casualties on our side and it's a civilian casualty. अबे क्रिकेट मैच नहीं है ये, पबजी का मैच नहीं है. किल टू डेथ रेशियो मेंटेन नहीं करना है अपने को कैजुअलिटीज अवॉइड करनी है कि केडी भाई हमारा केडी पाकिस्तान से अच्छा है ना. आई गेस पीपल आर गोइंग टू बी हैप्पी विद द केडी, राइट? देयर आर डम पीपल इन दिस वर्ल्ड हु बिलीव दिस. कब तक होगा ये क्रॉस बैक एंड फोर्थ? डू यू इवन अंडरस्टैंड दिस? आप अगर ये कह रहे हो पाकिस्तान को सबक सिखाओगे, तो पाकिस्तान से आपको क्या मतलब है? पाकिस्तानी पब्लिक वो तो ये बिलीव करती है कि हमने करवाया ही नहीं, हमारा तो रोल ही नहीं था. हमारी तो सरकार कह रही थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लो इसमें. आपने वो करने नहीं दी. इसका मतलब आपके दिल में चोर है. उनकी पब्लिक ये सोचती है. तो आप उनको थोड़ी सबक सिखा रहे हो. उनको तो ये हो रहा है कि आपने हमारी बॉर्डर पार करके इंटरनली आके हमला करा, एक यूनिलैटरल कार्रवाई करी है. बेस्ड ऑन व्हाट अथॉरिटी? इंडिया के पास क्या जुडिशियल अथॉरिटी है करने की? क्या ग्राउंड्स क्या है?
उन्होंने ये किया था। हाँ, वो आपका क्लेम है ना, आपने स्टैब्लिश करा नहीं करा? आप सोच रहे हो आपका स्टेटस यूएस के जैसे गुंडे ऐसी स्टेट का है कि आपने यूनिलैटरल कार्रवाई कर ली। इस आपसे ज्यादा स्मार्ट तो पाकिस्तानी निकला, उसने नॉन स्टेट एक्टर्स यूज करे। वो तो कह रहे हम थे ही नहीं, आप भी कर देते, कहते हम थे ही नहीं, पर आपने इंस्टेड क्या करा? आपने उनकी टेरिटरी को वायलेट करते हुए वहां पर एक कार्रवाई कर ली। अब आपको क्या लगता है वो यू आर राइट। क्या हमारे अटैक्स जो है, जो तो अभी यही चीज मैं अभी अपने अलग अलग चीजों में हमने पाकिस्तान में करे, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, so here's the thing, okay, I have this personal assertion कि military industrial complex will profit from the war, okay, and who is selling weapons to India and Pakistan? इंडिया को वेपन सेल कर रहा है इजराइल, पाकिस्तान को वेपन सेल कर रहा है चाइना, but to be honest, in my personal opinion, it's the Jews. Sorry, it's the Israelis and the USA, because they are masters at it. And there's a reason for it. Okay, there's a reason why I believe it's more likely Israel than USA, because Israel has an army of sold up Muslims, right? Okay, I mean, ISIS क्या है? ISIS works for Israel, guys. You need to know that ISIS is funded by Israel. How difficult it was to take few Muslims from, if not Israel, then maybe Pakistan, because Pakistan में उन्होंने already अपना network बना के रखा है, पाकिस्तान में already उनकी establishments है. How difficult it was to pay some 6 Muslims to come into Pahalgam and fucking kill Indians. How difficult it is. Okay, how much money would they have used on it? तुम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो देखो यार, उनका कितना 5 करोड़ लिए होंगे उन्होंने, वो टेररिस्ट ने, वो जो 6 लोग आए थे इंडिया में पहलगाम में. एंड हाउ मच मनी विल इजराइल एंड यूएसए मेक इफ द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कीप्स एस्केलेटिंग? रिमेंबर दिस, प्रॉफिटियर्स आर ऑफन द ऑर्केस्ट्रेटर्स ऑफ वॉर. प्रॉफिटियर्स आर द ऑर्केस्ट्रेटर्स ऑफ वॉर फॉर द मोस्ट ऑफ द पीरियड, and that is the case here too. और बात वही है कि इंडिया और पाकिस्तान are the pawns. They look like they as if they are pawns. Indians and Pakistanis are the pawns in this game. We are not the orchestrators of this war. Most probably we are not the orchestrators of this war. Now it's you need to understand, military industrial complex has mastery and expertise in instigating wars and orchestrating wars between other nations. That's how they make money. Okay, all the war propaganda are screaming and lies and hatred comes invariably from people who are not fighting. And मैं तुमको इसका एक जबरदस्त एग्जांपल. Ever notice how many characters had terrible childhood in Naruto but not in Boruto? That's because Naruto actually did his job as a Hokage. Bro, I love Naruto. Everybody should watch Naruto. War is never good. You are fucking idiots. Watch Naruto, you'll understand why war is not good. Some people make a lot of money during times of war, like the companies that sell weapons to the United States military. Really? Well, these companies were created during World War II, when we quickly needed a lot of weapons. They helped us win. But after the war ended, the government and military maintained a close relationship with these companies. I called that powerful union the military-industrial complex. Eisenhower warned the American people of how dangerous the military-industrial complex would be if they gained too much power and influence. I was concerned about the military-industrial complex because the opportunity for these companies to profit from war means they are incentivized to push politicians into fighting more of them. The more wars there are, the more weapons they get to sell, and the more money they make. Exactly, boys. And let's investigate the Israeli military-industrial complex. Okay. Military-industrial complex of Israel. The military-industrial complex refers to a network of comprising individuals and institutions engaged in manufacturing and manufacture of weaponry and military technologies. Its primary objective in a nation is to garner political backing or for maintaining and increasing military expenditure of the government. Coined by U.S. Dwight Eisenhower during his farewell address, the term military industrial complex serves as a cautionary undue influence wielded by the military industrial complex. ठीक है, ये छोड़ो. U.S. military financing since 2000. Since 2000, the U.S. has given $58 billion in aid
to Israel more than the rest of the world. Now you need to understand, Israel and USA are one country. Okay, Israel and USA are not two different countries. Okay, they are controlled by the same entity, that is the Federal Reserve Bank of America. And conscription in Israel in 1947, after the founding of State of Israel, the Defense Service Law gave IDF the authority to enlist any citizen. ठीक है, whatever. Military spending per capita, बेसिकली बोल रहा है कि यूएसए और इजराइल सबसे ज्यादा मिलिट्री पे स्पेंड करती है. क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लाइक इक्विपमेंट एंड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग यूएसए के पास है. एंड यूएसए डजंट यूज इट फॉर डिफेंस, यू नो, बिकॉज यूएसए डजंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग एल्स लाइक चाइना. वो बाद में बताऊंगा मैं कैसे. यूएसए एड टू इजराइल वर्सेस यूएस. हाँ ठीक है. कंट्रीज विथ मिलिट्री टाइज टू इजराइल. इजराइल इतने सारे कंट्रीज को वेपन्स भेजता है. ओके, इंडिया को इतने सारे वेपन्स इजराइल से आते हैं, टेक्निकली यूएस से आता है. अगर तुम ये फिगर को ढंग से समझो तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये इजराइल का इंपोर्ट्स है. इंपोर्ट्स, मिलिट्री इंपोर्ट्स यूएसए से इजराइल के पास इतने आते हैं एंड वो इंडिया को इतने मिलिट्री एक्सपोर्ट्स भेजता है. नाउ इंडिया इजराइल से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट कब खरीदेगी? जब इंडिया को उसकी जरूरत होगी. अब इंडिया को जरूरत कब होगी? जब इंडिया वॉर पे जाएगा. तो ये वॉर किसने ऑर्केस्ट्रेट किया है? आर वी श्योर ये पाकिस्तान ने किया है? मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की मशीनरी को इजराइल ने यूज नहीं किया होगा. आई एम टेलिंग यू, उन्होंने पाकिस्तान की मशीनरी को इजराइल ने यूज किया होगा. बट आर दे ऑर्केस्ट्रेटर्स? Because it looks like India and Pakistan is a pawn in this game. We are not the orchestrators of the game. We are the pawns. This is fucking stupid. Okay. And there is a reason why I think China didn't do it. First of all, China is not a civilization like that. China is not a monotheistic civilization, first of all. It's a polytheistic civilization like India. And China is at least China is 15,000-year-old civilization. They don't do wars. Okay, for like this. China ने अपना सारा पैसा हमें फोन्स, कंप्यूटर्स, हेडफोन, पॉडकास्ट सेटअप, मतलब उन्होंने ये सारी चीजें हमें बेची है ब्रो. वो हमें कंप्यूटर्स बेचते हैं, वो हमें हेडफोन्स बेचते हैं, वो हमें पॉडकास्ट सेटअप बेचते हैं, जो मैं जिस पॉडकास्ट को सेटअप यूज कर रहा हूँ, जो रिंग लाइट में यूज कर रहा हूँ, जो मैं पीसी यूज कर रहा हूँ, ये सब चाइना से आया. China doesn't make its money from military industrial complex as much as America does. मैं ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान को चाइना ने वेपन्स नहीं बेचे. क्यों नहीं बेचेगा वो? पर China is not the country to instigate wars. I don't believe China does that. Okay? I don't believe China does that. China एक जेन्युइनली काफी हार्ड वर्किंग कंट्री है. चाइना ने बिना किसी कंट्री को इंपेरियलाइज किए अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा बनाया. एंड चाइना वुड मच रादर सेल यू मोबाइल फोन्स देन वेपन्स. रिमेंबर दिस. America needs to sell you weapons. Why? Because America doesn't sell you mobile phones. America doesn't manufacture mobile phones. America doesn't manufacture mic. America doesn't manufacture computers or anything. America manufactures weapon. There's a lot of shit going on in this world, guys, and we cannot be naive. Let's go to x.com. Okay, how many people are aware of Europa? The last battle. Okay, I want you guys to watch this documentary. Okay, Europa, the last battle. If you truly want to understand how wars work, and if you truly want to understand how World War II happened, you need to watch Europa last battle. I am telling you, Netflix देखना बंद करो, Amazon Prime देखना बंद करो. Europa the last battle, ये क्या है ये डॉक्यूमेंट्री देखो, ये वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री. एंड आई एम टेलिंग यू ब्रो, दिस इज द मोस्ट अनसेंसर्ड डॉक्यूमेंट्री यू विल एवर वॉच ऑन वर्ल्ड वॉर 2. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ कैसे. You need to understand कि history is written by the victors, and who won the history, who won the World War II? The Allied
forces won the World War II. America and Britain and Russia won World War II. Hitler lost World War II. And Hitler is a villain. I mean, how is it possible that always the good guys win and the bad guys lose? Okay, दुनिया एक फिल्म नहीं है, ठीक है, एक बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है जहां पे गुड गाइज ऑलवेज विन एंड द बैड गाइज ऑलवेज लूज. हैप्पी एंडिंग हमेशा नहीं होती, ठीक है. हैप्पी एंडिंग हमेशा रियल लाइफ में नहीं होती. रियल लाइफ में बैड पीपल ऑफन विन. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यूरोपा द लास्ट बैटल, ये वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री देखो. यू विल रियलाइज uncensored truth about World War II. Who made it happen? What was the true history of World War II? Please watch Europa the Last Battle. जो भी प्रोपेगेंडा तुमने बचपन से सुना है ना वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, पूरा रिवर्स हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवर्स होगा. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री दैट एक्चुअली पोर्ट्रेज द जर्मन साइड. कि यू नो जर्मन की स्टोरी क्या है. आई मीन वी डोंट नो द जर्मन पॉइंट ऑफ व्यू, वी नो द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, वी नो द ब्रिटेन पॉइंट ऑफ व्यू. We know okay, Hitler wanted to kill Jews, but we don't know the Hitler's point of view, because Hitler lost the war. Germany lost the war, and that's why we don't have the German point of view. You need to understand that history is written by the victors, and the victors are not always the good guys. Often bad people win and they rewrite history and they portray themselves to be the good guy. I'm telling you, Europa the Last Battle is a documentary everybody needs to watch, especially in today's time when we are all entering the war. You need to understand how wars happen. Please watch Europa the Last Battle. You will cry. I cried when I watched this documentary. Please watch this. But I also have a website, my website, Ken O'Keefe. So it's like a truthful account of history that appears to have been, fact-checked? Okay. To have a death grip held over. If there was one physical subject, one material subject that we should focus on, in my opinion, it is very clear that the head of the snake is the financial system. The whole point of finance is to indebt, otherwise to enslave. What is a mortgage? I mean, what does that stand for? You will not understand this very soon. Fact share this book that one last race in 8. History is always written by the winners. When the two cultures clash, the loser is obliterated and the winner writes the history books which glorify their own cause and disparage the conquered foe. As Napoleon once said, what is history but a fable agreed upon? In the middle of the 19th century, help in this realization, the religion of death. Fascinatingly, he predicted a future war in Europe. Its key points include 20 articles as the father, Born in Frankfurt, Germany. prop is cult follow revolutionary Holocaust. You won't have to risk. Please watch Europa the Last Battle. With the root cause of Pearl Harbor, then it goes into a part that I didn't know. Then we think of all the people who oppose the federal. So today we're going to talk about a documentary that I just watched, which I think everybody should see. So it started off with the root cause of Pearl Harbor. Then it goes into a part that I didn't know. Then we think of all the people who oppose the Federal Reserve and what happened with them. Then it goes into this report which debunks everything that happened in Auschwitz. That these facilities never in fact contained
hydrogen cyanide gas. Then we have this fellow, David Cole, in his 1992 documentary, which talks about how these holes were put in after the war. Are those the original holes in the ceiling? No. They've been rebuilt? Yes. Okay. After the war? After the war. It's interesting. A piano, a movie theater, and much. You had the organ put into the set. That I just watched, which I think everybody, the root cause. ठीक है. कि ये अटैक इन बच्चों पे नहीं हो सकता था और ये मरते नहीं थे. You need to understand one simple thing now. Okay? There are no good guys in war now. Okay? पाकिस्तान के भी सिविलियंस मर रहे हैं और इंडिया के भी सिविलियंस मर रहे हैं. एंड ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. इट्स इम्पॉसिबल कि सिविलियंस ही मर रहे हैं दोनों साइड पे. एंड दैट्स द पॉइंट मैन. आई मीन सिविलियन कैजुअलिटीज इंक्रीज अगर होने वाली है तो व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर? Are you fighting to save your civilian population or are you fighting to flex your military muscle? कि हम तुम्हारे 1000 सिविलियन मारेंगे, हम तुम्हारे 2000 सिविलियन मारेंगे. अगर तुम हमारे 1000 सिविलियन मारोगे तो हम तुम्हारे डबल सिविलियन मारेंगे. तुम हमारे 10 मारो, हम तुम्हारे 20 मारेंगे. तुम हमारे 30 मारो, हम तुम्हारे 60 मारेंगे. Bro, this is fuck all. No, war is not a game of cricket. And I'm telling you, bro, I had a very interesting conversation today with a guy. And by the way, fuck this, bro. I mean, I'm telling you, काफी unintelligent operation था ये सिंदूर, और इसका नाम भी काफी lame था. And the reason why I'm saying this is because, as I said, bro, I don't support hot war. I support cold war. I support regime change. Change the regime of Pakistan. And we should be able to do it. अगर हम इतने अच्छे planners हैं, अगर हम इतने अच्छे strategists हैं, तो why the fuck can't we do a regime change in Pakistan without doing a hot war? I'm not saying India shouldn't do anything to Pakistan. I'm telling you, India should do something. But what should we do? Not a hot war. We should do cold war. We should do proxy wars. We should do regime change. Are we going to do the regime change? No. We are going to do the hot war now. And in this hot war, civilians are going to die. कुछ भी कहो, this was lame. ऐसा लगता है किसी संजय लीला भंसाली मूवी का टाइटल है बहनचोद. And that's why, because you know, संजय लीला भंसाली की मूवीज वैसे भी वॉर्स में, I mean, it's just fucking stupid drama. I mean, it's not really, ऐसा नहीं कि संजय लीला भंसाली की मूवीज में काफी वॉर स्ट्रैटेजीज होती है, कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंटेलिजेंट मूवी होती है जिसमें बहुत ही अच्छे वॉर्स के बारे में तुम ज्ञान देते हो, वॉर कैसे होता है. नहीं, तुम ड्रामा करते हो. ये सिंदूर भी वही है. This is not a good strategy. I mean, look at these people, bro. अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग रेजिम चेंज करता है. अगर इनको किसी देश से प्रॉब्लम है तो ये लोग रेजिम चेंज करेंगे. लोग कभी हॉट वॉर में नहीं जाते, बहुत कम बार. आई एम नॉट सेइंग कि इसने कभी हॉट वॉर नहीं किया है, पर ये लोग रेजिम चेंज करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं. एंड वी शुड डू दैट टू. I'm telling you guys, the only two people who are playing the geopolitical game right are these two people. अगर दुनिया में कोई चैट्स है तो शी जिनपिंग है एंड व्लादिमीर पुतिन है. दे अंडरस्टैंड. दे विल मेक श्योर कि चाइनीज लोग ना मरे. दे विल नेवर डू आउटराइट वॉर. वो लोग हमेशा प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो लोग रेजिम चेंज करेंगे, वो डी डॉलराइज करेंगे. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू डी डॉलराइज, बाय द वे. आई मीन,
and I hope these two people can lead the world, because I genuinely think these are the only two people who are the forces of good, and they are also very smart. They are not dumb people, you know. I mean, एक होती है दिल का अच्छा होना और दूसरी होती है दिमाग का भी अच्छा होना. ये दोनों लोग हैं जो दिल और दिमाग दोनों से अच्छे हैं.